faith promise. खुदा ने उसके ईमान की वजह से एक वादा किया है. God's promise with Abraham. खुदा ने इब्राहिम से वादा किया. पैदाइश 15 बाब पहली से 7 आयत में लिखा है, इन बातों के बाद खुदा उनका कलाम रोया में इब्राहिम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ऐ इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिर पर और तेरा बड़ा अजर हूँ. इब्राहिम ने कहा, ऐ खुदावंद खुदा तू मुझे क्या देगा. मायूस हो जाते हैं, दिल छोड़ देते हैं, अब क्या होगा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीअज़र है. फिर इब्राहिम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी. अब इसने शिकवा भी किया है. 75 साल की उम्र ऑलरेडी पैस हो गई है. साल गुजरते जा रहे हैं, साल गुजरते जा रहे हैं, साल गुजरते जा रहे हैं. तू मुझे क्या देगा, कोई औलाद नहीं है. देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा. माई सर्वेंट जो है वो मेरा वारिस होगा. वो ऊन करेगा सारा कुछ. जो मुझे तू बरकत तो दे दी, वहां से बुलाया, बरकत दे दी, लेकिन तूने कहा था कौमों का बाप होगा, औलाद किधर है. तब खुदा उनका कलाम उस पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, जो खादम है, जो नौकर है, तेरा वारिस ना होगा, बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा, योर ओन फ्लैश, जो तेरी बॉडी से, तेरे बदन से पैदा होगा, वो इसका वारिस होगा. और वो उसको बाहर ले गया. खुदा ने अब क्या किया है कि इब्राहिम को बाहर ले गया और क्या कहा, और कहा अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन. और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी. वो कहता है जो मेरा नौकर है, सारे मालो दौलत का, चूंकि वही हमारे पास है, मालिक होगा. खुदा ने कहा आसमान की तरफ देख, अगर तू सितारों को गिन सकता है तो बता मुझे, तेरी औलाद इस तरह अनगिनत होगी. और वो खुदावंद पर ईमान लाया. फिर गिला किया है, फिर खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसके हक में रास्तबाजी शुमार हुआ. जब हम ईमान के साथ चीज़ें करते हैं तो वो भी एक रास्तबाजी का साइन है. और उसने उससे कहा, मैं खुदावंद हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर से निकाल लाया कि तुझको ये मुल्क मिरास में दूं. और पैदाइश 17 पहली से 5 में जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ, प्रॉमिस क्या है मेरे जो, जब 99 ईयर ओल्ड हो गया है, तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदा कादिर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा. तब इब्राहिम सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम हो कलाम होकर कहा, क्या देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा और तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा. यहां पर चेंज किया है, प्रॉमिस किया है खुदा ने. इस शख्स ने जब वहां से निकला, टेस्ट आया है. टेस्ट के बाद क्या हुआ है, अभी भी जिस चीज के लिए खुदा ने वादा किया है, मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, वो तो अभी हुआ नहीं. और शख्स जो है 75 ईयर से लेकर अब 99 100 ईयर का होने वाला है और इसने शिकवा किया है खुदा से कि खुदावंद कहाँ है वो औलाद जो मेरे मालो दौलत की वारिस होगी, कहाँ है वो औलाद, वहां वो है वो बच्चे जो इनके वारिस होंगे. लेकिन खुदा क्या लिखा है, रोया में खुदा उसके पास जाता है, उसको उठाता है, उठ कमरे निकल, टेंट से निकल और आसमान की तरफ देख. क्या तू सितारों को गिन सकता है? नहीं. क्या तू सितारों को गिन सकता है? नहीं. क्या तू सितारों को गिन सकता है? नहीं. अगर तू सितारों को नहीं गिन सकता तो तेरी औलाद इन सितारों की मानद होगी, जमीन के रेत के जर्रों की मानद होगी, जिनको तू काउंट नहीं कर सकता, जिनका तू शुमार नहीं कर सकता. तेरी औलाद ऐसे होगी. और फिर लिखा, फिर ये खुदावंद पर ईमान लाया है क्योंकि खुदा ने कहा तू जानता है कहां से तुझे निकाला है. कसदियों के ऊर में, कसदी जो है अननोन नेम है, लेकिन इराक का उस एरिया इवन जिसका नाम नहीं रखा गया, वहां से इसको निकाला गया है. बाप बुत परस्त है, बुतों का बिजनेस करता है, लेकिन खुदावंद ने
جب ابراہیم کو بلایا ہے تو میرے عزیزو یہ اس بات کو فالو کرتا ہے، اور خدا نے کہا تو میرے حضور میں کامل رہنا ہے، تو نے میرے حضور چل اور کامل رہ، میں تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا، میں تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ اگر آج تک سٹاپ لگ گیا ہے تو بڑھوتی نہیں ہو رہی تو میری بہن میرے بھائی اس کام کو یاد کیجئے گا، جب خدا نے آپ کو کال کیا تھا تو وہاں سے نکل، باپ کے گھر سے نکل، اس ملک سے نکل، اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس جگہ پہنچاؤں گا جہاں تجھے برکت ملے گی، تیرے وسیلے سے بہت سے لوگ برکت پائیں گے، اور یہ میرا تیرے ساتھ عہد ہے۔ پرامس کیا ہے کہ آج کے بعد تو ابراہیم نہیں ہے، چونکہ تو دوبارہ خدا پر ایمان لایا ہے، تو ایگزالٹڈ فادر نہیں بٹ فادر آف مینی نیشن، بہت سی قوموں کا باپ ہوگا۔ اور تیسرا سٹیپ جو اب ابراہیم کی زندگی میں آیا ہے میرے عزیزو، وہ پرامس ہے۔ پرامس کے ساتھ نیم چینج ہوا ہے۔ جب نیم چینج ہوا ہے تو نیم چینج کریں، کیونکہ نیم چینج کرنے کے بعد بڑی برکتیں ہیں، نیم چینج کرنے کے بعد آسمان کے ستاروں جیسی برکتیں موجود ہیں، نیم چینج کرنے کے بعد جو زمین کے ریت کے ذرے برکتیں موجود ہیں۔ میں اور آپ اگر برکتیں پانا چاہتے ہیں تو اس فیتھ کی طرح جو فیتھ فادر ہے، جس کو قوموں کا باپ کہا گیا ہے، ابراہیم کی مثال اپنے سامنے رکھے گا۔ جب نیم چینج ہو گیا ہے، برکتیں چینج ہو گئی ہیں۔ اگر آپ کی برکت رکی ہے، ٹرائی ٹو چینج یور نیم، اپنے نام کے ساتھ خدا یسوع مسیح نے کہا ایسا نام میں تجھے دوں گا جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے، اور وہ نام کتاب حیات میں لکھا ہے۔ میری بہن میرے بھائی، اگر دنیا میں گم ہے، دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں کچھ، تو آج میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، اس نام کو جو یسوع نام ہے اپنے ساتھ لیجئے گا۔ اسی نام میں برکت ہے، اسی نام میں شفا ہے، اسی نام میں طاقت ہے، اور وہی نام معجزات کا خدا ہے۔ اسی سے معجزے ہوتے ہیں اور اسی سے قومیں سربلند ہوتی ہیں۔